எனக்கு புரியாது. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, all. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Yeah. Yeah. Good morning. So in the last
part of circular motion, we discussed how to find out the acceleration. So in circular motion, basically we'll find out two type of acceleration. One acceleration which is responsible for change in magnitude, and another acceleration which is responsible for change in direction. The acceleration which is responsible for change in magnitude is known as nothing but a tangential acceleration that will be always tangential to the surface, that is represented by, let's say, AT. And the component of acceleration which is responsible for change in direction is known as nothing but a normal acceleration, and that normal acceleration is always acting perpendicular to the direction of instantaneous velocity. Or if you're drawing a normal acceleration over here, it is always towards the center. So this acceleration is also known as nothing but a centripetal acceleration or radial acceleration. So this is nothing but normal acceleration at this point. Now, if you'd like to find out the net acceleration, that is the vector sum of normal acceleration and tangential acceleration. So this is going to give the value of net acceleration at that point. Same as like that, if you'd like to find out the acceleration at a point, let's say somewhere over here. So you can write its tangential acceleration will be along this direction. Let's say it is 80, and its normal acceleration will be along this direction. Let's say that is equal to an. So if you are going for the vector sum of these two, we'll get the value of resultant acceleration, or we'll get the value of net acceleration. Then we discussed how to find out the value of tangential acceleration and normal acceleration. If you'd like to find out the value of tangential acceleration, we'll just go for v minus u divided by t. Means we'll not go for v vector minus u vector, just magnitude of final velocity minus magnitude of initial velocity by time, because it is responsible only for change in magnitude. And if you like to find out the value of normal acceleration, then we can use that equation like v into omega, or we can write as this v square divided by r, or r omega square, where r is the radius. So we can use any of these technique to find out the value of normal acceleration. And once we got the value of normal acceleration and tangential acceleration, we can write net acceleration will be equal to under root of an square plus 8t square. Okay. So up to this, we discussed in the last class. Sir, Boloda. sir, can you give some examples related to this? Yeah. Yes, sir. Good questions. Now we'll discuss about there are two type of accelerations are there. One is known as a uniform circular motion, and another one is known as non-uniform circular motion. So we'll discuss Why about did you that part. write What do you mean by normal acceleration as v omega? normal acceleration is v into normal acceleration का equation है ना v into omega. Last class में पढ़ाया था. Last class में centripetal acceleration लिखा था, देखो. Sir, I was not there. किधर गया? Right, my network issue. Once again, I'm saying that if you are having any network issues, please inform me. Yes, sir. WhatsApp me कि मैंने ये class attend नहीं कर पाया because of these reason. Okay. ठीक है यार, just आपका time waste मत करो. मैंने class attend नहीं कर पाया. I need the recording of this lecture, so I'll send it to you. Okay, Okay. sir. Yes. So over here you can write this uniform circular motion. Uniform circular motion means अभी आप just last class अगर miss हो गया तो ऐसा assume करो कि वो उसका value वो है, ठीक है, उसके लिए equation है वो, ठीक है. Now I'll discuss about this uniform circular motion. Okay, sir. In case of uniform circular motion का meaning है where the particle is moving through a circular path with constant velocity. So over here, particle is going to move through the circular path with constant velocity. So let's say particle is constant speed, not constant velocity, constant speed. Let's say when particle is over here, this one is the direction of instantaneous velocity. And when particle is over here, this is the direction of instantaneous velocity. When particle is over here, this one is the direction of instantaneous velocity. And इसका direction change कर रहा है, but magnitude change नहीं कर रहा. Okay.
So this type of motion in which the particle is moving with a constant velocity is known as nothing constant speed is known as nothing but a uniform circular motion. अभी हम देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या पैरामीटर है. So in case of uniform circular motion, if I am writing velocity is equal to a constant, is it correct or not? No, sir. No, sir. No. Direction is changing. Direction Direction is बदलता रहेगा. Okay, so we can say that over here velocity is not equal to a constant because the direction of velocities keep on changing. Second one, if I am writing the magnitude of velocity is equal to a constant, is it correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Over here speed is a constant, so we can say that its magnitude of velocity is a constant. Now over here, if I am writing acceleration is equal to 0, is it correct? Hmm. In uniform circular motion, Yes, sir. acceleration is it equal Yes, to sir. 0? No, sir. No, sir. No, sir. No, no. No, Because sir. direction Because is changing. So Direction of velocity. velocity is changing. So we can create acceleration either by changing the magnitude or by changing the direction. Over here, Direction. magnitude to change nahi ho raha, but direction change kar raha. So we can say that it is accelerating, right? So Hmm. acceleration is not equal to 0. Now we can write the next point. Let's say fourth point. If you are writing this acceleration is equal to a constant, is it correct? No, sir. Acceleration is equal to a constant. No, sir. Acceleration constant है कि नहीं? नहीं. नहीं सर. ठीक है, फिर हम देखते हैं. ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे. तो पहले इसका कंपोनेंट देखते हैं तो आपको और आइडिया मिलेगा. Over here, if I am writing the tangential acceleration is equal to 0, is it correct? Yes. Yes, sir. Yes, because उसका magnitude change नहीं कर रहा है तो tangential Yes. acceleration is equal to 0. Now, if I am writing the normal acceleration, is it equal to 0? No. No, sir. No. Normal acceleration is not equal to 0. Direction Now, if I am बदल writing this normal acceleration is equal to a constant, is it correct? Normal acceleration is a constant, is it right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. तो नॉर्मल एक्सेलरेशन का वैल्यू, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है उसके लिए इक्वेशन क्या था? v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r और r ओमेगा स्क्वायर और v इनटू ओमेगा. So in case of uniform circular motion, v constant है, omega constant है, rb constant है. So we can say that acceleration is a constant. But एक चीज आप याद रखो, अगर पार्टिकल इधर है तो इसका नॉर्मल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर रहेगा. एंड पार्टिकल इधर है तो भी नॉर्मल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर रहेगा. तो डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एक्सेलरेशन, इज इट अ कांस्टेंट? Yes. Direction of normal acceleration, is it a constant? Yes, sir. Towards the No. center. No. अभी देखो towards the center तो है, but ये point में था तो acceleration का direction towards left में था. जब ये point Yes, में आ गया positive and acceleration का negative. direction towards right में हो गया, तो acceleration sir, का yes. direction change हो रहा है. तो acceleration का magnitude constant है, but direction is not a constant. So we cannot write acceleration, normal acceleration is a constant. Normal acceleration is not equal to a constant. But we can say that the magnitude of normal acceleration is equal to a constant. समझ में आया? तो अभी बोलो इसका जो नेट एक्सेलरेशन है, इसका नेट एक्सेलरेशन है, it is equal to nothing but normal acceleration. Is it correct? Yes. 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 Net acceleration is tangential acceleration plus its normal acceleration. But normal acceleration, tangential acceleration 0 है, तो net acceleration is equal to normal acceleration. Now this statement, अभी इसका बारे में बोलो, net acceleration, is it equal to a constant? No, sir. Magnitude of acceleration, net is it acceleration is constant. Magnitude constant है, but direction constant नहीं है. So we can write over here, this net acceleration is not equal to a constant. But we can say that ये जो net acceleration है,
उसका जो मैग्नीट्यूड है that is equal to a constant and that is equal to nothing but the magnitude of normal acceleration, Accelerate. right? अभी हमने इसका corresponding angular components को देखता है, ठीक है? So on 10th point we can write in uniform circular motion the value of omega, is it equal to a constant? The value of omega, is it equal to a constant? Yes, sir. Yes. तो इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, राइट? नाउ वी कैन राइट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इज इट इक्वल टू 0? Angular acceleration alpha is equal to 0. नहीं, Is sir. it correct? No, sir. No. Why? Direction is changing. No. Direction कैसे change करता है? Alpha का direction क्या है? When an object is moving in a circular path, what about the direction of alpha? Direction of omega? Clockwise or anti-clockwise? एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं होता है, बोलो। अगर पार्टिकल ऐसा रोटेट कर रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा? Upward. Towards us. अपवर्ड, यस, Upward. टुवर्ड्स यू, या। तो अभी पार्टिकल ऐसा ही रोटेट कर रहा है, मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो वो अल्फा ओमेगा का डायरेक्शन किधर रहेगा? ऑलवेज परपेंडिकुलर सरफेस और आउटवर्ड ही रहेगा, Yes, sir. Yes. बट अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। तो मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, ओके? सो अल्फा का वैल्यू इज इट इक्वल टू कांस्टेंट? सॉरी, अल्फा इज इक्वल टू 0? Yes, sir. यस, बिकॉज़ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, ओके? तो वेलोसिटी कांस्टेंट इधर लिखा है, उसका मतलब क्या? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, ऑलराइट? Sir, can इसमें you कोई भी पॉइंट में explain कुछ डाउट again? है? Which one? Sir, 10th and 11th. Sir, eighth one. The particle is moving in a circular path. Particle Yes, is sir. moving in a circular path with constant angular velocity. So angular velocity का जो magnitude है और direction है, दोनों change नहीं हो रहा है. Yes. So we can write angular velocity is equal to a constant. Yes. So angular velocity constant है, तो we can write the value of angular acceleration is equal to 0. Yes. Okay, got है ना? it. Angular acceleration क्या होता है? Change in angular velocity by time. Angular velocity constant Yeah, है, तो yeah, change ही नहीं got हो it, रहा है, तो got angular it. acceleration 0 हो गया ना? Yes. Yeah. और कौन सा पॉइंट में डाउट है? 8th में डाउट है? Yes, sir. और तो नेट एक्सेलरेशन क्या होता है? बोल, या net acceleration is nothing but the vector sum of normal acceleration plus tangential acceleration. So in case of uniform circular motion, ये जो tangential acceleration हो तो 0 हो गया, right? Yeah. So what about the value of its net acceleration becomes equal to nothing but then the value of net acceleration becomes equal to normal acceleration. Got it? Yes, sir. Yeah. Yeah. Thank you. So write down all these, write down the heading, uniform circular motion, and write down all these things. First write down uniform circular motion, then you can write in uniform circular motion, in uniform circular motion, particle is moving with constant speed. Sir, बोलो बेटा, सर अल्फा का मैग्नीट्यूड बोलो। कांस्टेंट रहेगा? अल्फा का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा ना? अल्फा का मैग्नीट्यूड
अल्फा 0 है ना बेटा, अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन है ना. Okay, okay. Angular velocity is a constant, so angular acceleration is 0, right? Hmm. हो गया? Yes, sir. Yes, Sir, sir. net acceleration should be an, right? A and S is. Okay. Sir, so if net acceleration is an, then sir, can you explain the 7th point once again? Normal acceleration is a constant. Normal acceleration का value है v square by r, r omega square और v omega. तो v भी constant है, omega भी constant है. तो net acceleration का जो magnitude है वो constant है. Okay. But direction constant नहीं है, because जब a point में था, तो अगर पार्टिकल ए पॉइंट पे है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ है. पार्टिकल इधर आ गया तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ हो गया. तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम नहीं है. Okay. तो डायरेक्शन कीप ऑन चेंजिंग बट मैग्नीट्यूड इज अ कांस्टेंट. Okay. गॉट इट? Now in the next part we'll discuss about non-uniform circular motion. Write the heading non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion means where the particle is moving with a non-uniform velocity or non-uniform speed. Means इसका magnitude भी change कर रहा, direction भी change कर रहा. Okay. So we can just consider the situation that assume that the particle is starting from this point and इसका initial velocity का value था let's say u, and after some times इसका velocity हो गया let's say that is equal to v. तो इसका speed भी change कर रहा, direction भी change कर रहा. So over here you can write the things which are related to this. So in case of uniform circular motion, this velocity, is it equal to a constant? No, sir. In uniform circular motion, velocity, is it equal to a constant? No. 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 Sir. Magnitude of velocity, is it equal to a constant? No. So over here, No. magnitude भी constant नहीं है, direction भी constant नहीं है. So over here you can say that the value of its acceleration, so इसका normal acceleration will have some value, and so normal acceleration is not equal to 0, Not. and this tangential acceleration is also not equal to 0. ये दोनों 0 नहीं है. So right, the value of its net acceleration will be equal to nothing but
vector sum of its tangential acceleration plus normal acceleration. Now over here, along with that, you can see that the value of angular velocity, is it equal to a constant? Angular velocity, is it equal to a constant? No, sir. No, 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 because sir. its magnitude is changing. Changing. So we can write next one. So if it is having some change in angular velocity, there will be some angular acceleration. So this angular acceleration Not is not constant. equal to 0. कुछ angular acceleration है. So we can write this angular acceleration is equal to nothing but we can write omega final minus omega initial divided by time. And इसका जो direction है वो हम लोग right hand thumb rule से find out कर सकता है. So that is the main difference between uniform circular motion and non-uniform circular motion. Around this pen. sir. सर बोलो बेटा. The velocity वो is not फर्स्ट equal टू to कांस्टेंट constant. नहीं है ना? Velocity is not equal to constant. AB not equal to Sir. constant. बोलो बेटा. बोलो बेटा. This angular acceleration जब constant होगा तभी we'll be able to use this formula, right? Angular final velocity minus initial angular Yes, velocity. yes. Otherwise, we'll go for d omega by dt. Yeah. Otherwise, So we'll go- the yes. angular acceleration is constant. So, no, it can be a constant, cannot be a constant. कोई भी Okay. कुछ भी हो सकता है. मतलब non uniform acceleration भी हो सकता है, uniform acceleration भी हो सकता है. Sir, in the last one, angular acceleration is vector or just magnitude? Net acceleration का बात कर रहा है? नहीं ये vector है. So vector. Okay, लिख दिया. Yes, sir. Now in some question, they'll ask to find out what about the value of radius of curvature of a circular path. So we'll discuss how to find out the value of radius of curvature and from this normal acceleration. So from the headings, radius of curvature. So can you scroll a bit up? So that's it. So radius of curvature का meaning है, assume that if a particle is moving through a path something like this, okay? So we can just consider that when the particle is moving through a path over here, so this particular path can be considered as a part of a circle. तो ये point में उसका radius of curvature होगा a, ठीक है? Like that we can just consider that if a particle is over here, that is moving through a circular part, we can assume that is moving through a circular part of radius r. तो हो गया a point का radius of curvature. Like that over here we can just consider that it's a part of another circle of radius, let's say r2. तो कोई भी point में अगर particular direction change कर रहा है तो we can find out what about the value of its instantaneous radius of curvature at that point. So if you like to find out the value of radius of curvature, then we can find out it from the equation of this normal acceleration. Let's say if you're having a path something like this and an object is moving through this path, and when it is over here, it was moving with a velocity, let's say that is equal to v. So we are assuming that this is basically a part of a circle
of radius, let's say that is equal to r. And Rm is to find out what about the radius of the circular path. Okay. So what we'll do is we'll find out what about the value of its normal acceleration. Let's say normal acceleration, yeah, centripetal acceleration over here is given an. So we can write the equation for this normal acceleration, that is equal to nothing but v or r में relation है, a is equal to v square divided by r. Normal acceleration is equal to v square by r. So from that we can find out the value of this radius of curvature of the circular path is equal to v square divided by its normal acceleration. तो पता चलेगा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में अगर हमने एक जो पाथ है उसको सर्कल जैसा कंसीडर करें तो वो सर्कल का रेडियस क्या होगा, एंड दैट इज नॉट समथिंग बट अ रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो ये जो आ रहा है उसको बोलते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर. So write down this one. Sir, here V is along the circumference. बोलो बेटा. Here V is along the circumference. V is or no? instantaneous velocity at that point. Velocity is tangential. T में V क्या है? Tangential velocity. Okay, yes. So the point where the Yeah, along particle the changes the circumference. direction ना V is. क्या बोला? So the point where the particle changes the direction. एक और बोलो, From, सुना नहीं है. so the point where the particle changes the direction from there we measure the radius of curvature. Hello, sir. I'm unable to hear you. Sir, So I'm आवाज break हो रहा है. Sir, I'm asking that the point where the particle changes the direction, or from there we measure the radius of curvature. I'm unable to hear you exactly, but I'm that what you are asking is जाके Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. हेलो बेटा. नहीं सर, वो आपका आवाज नहीं आ रहा था इसलिए. अभी आ रहा ना आवाज? Yes, sir. तो Sir, Yes, sir. over here इस केस में बोलो तो बेटा. वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा तो कैसे मतलब नहीं velocity velocity constant नहीं है. I'm not saying that velocity is constant. तो velocity कौन सा point में velocity है वो point का velocity लेगा. मतलब अगर particle इधर है Instantaneous तो इसका velocity velocity है, ये है तो मान लो यहाँ instantaneous velocity तो उसका radius भी constant नहीं है. radius भी change होते जा रहा है. मतलब जब इधर आएगा तो it will be a yes sir. part of another circle of radius, let's say r2. तो हमने v2 divided by r2 square करेगा. ये point में आएगा तो velocity change करते रहेगा तो उसके सबसे acceleration भी change होगा, radius of curvature भी change होगा. ऐसा तो कौन सा point में radius of curvature देख रहा है वो point का velocity देख. yes 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 yes. वो instantaneous radius of curvature है वो और instantaneous velocity. Thank you, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So I'll take an example for it. Like हमने projectile motion तो पढ़ा है. Let's say if an object is projected from here with a velocity, let's say that is equal to u, and making an angle theta with respect to the horizontal. So we know that it is moving through a path something like this, and after some times it is going to hit the ground. तब कोई भी point में आप assume कर सकता है actually this one is a part of a circle like that. ठीक है? तो ये पूरा part circle का part नहीं है. ठीक है? बोला सर, but कोई भी point में let's say at the maximum height, we can just assume that it is part of a circle of radius r,
तो ये जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट इज ये जो कुछ पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ का रेडियस जैसा आ रहा है, तो फाइंड आउट करना है इसका रेडियस का वैल्यू क्या है। तो आपको अगर मैक्सिमम हाइट में रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है, तो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। तो हमको पता है कि मैक्सिमम हाइट में जो भी वेलोसिटी होगा ओनली इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, तो ये वेलोसिटी होगा u cos थीटा। तो ये हो गया हमारा v का वैल्यू। अभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सॉरी नॉर्मल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देखना है। हमको पता है इन मोशन अंडर ग्रेविटी एक ही एक्सेलरेशन है, दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो g है which is nothing but our normal acceleration, so we can find out what about the value of radius of curvature at this instant. So at the maximum height radius of curvature का value हो जाएगा v square which is u square cos square theta divided by normal acceleration is g. Got it? तो ऐसा कोई भी पॉइंट में आप उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर सकता है। तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है वो देखना है, समझा? Sir, we will not take minus g. Put on this one, बोलो बेटा। We will not take minus g. बिकॉज वो जो नो माइनस जी रिप्रेजेंट्स आपने अगर एक सिस्टम एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया तो, बट नॉर्मल में क्या बोलते हैं कि वी आर ऑलवेज सेइंग दैट इज टुवर्ड द सेंटर लाइक दैट। Okay. Sir, how did you get u square cos square theta? v स्क्वायर था ना, r इज v स्क्वायर बाय n। हाँ, okay. ये फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। Yeah. हो गया? Yes, sir. Now discuss some problems which are related to this circular motion. So take that level 1 question number 39. It is given that a circular disk is rotating about its one axis at a rate of 200 revolutions per minute. Two particles P and Q of disk are at a distance of 5 cm and 10 cm from the axis of rotation. The ratio of angular velocity of P and Q is. So question का meaning है a disk is rotating about its one axis. Assume that we are having a disk shape object. Let's say the object is something like this. Okay. So rotating about its one axis. मतलब हमारा जो disk shape object है वो rotate कर रहा है about this axis. तो ये हो गया इसका axis of rotation. And it is rotating with some angular velocity. Let's say it is rotating with some angular velocity omega. तो omega से वो rotate कर, ठीक है? Now, at the rate of 200 revolutions per minute. So omega का value दिया है 200 revolutions per minute. मतलब rotations per minute में दिया है. Two particles P and Q of disk are at a 5 cm and 10 cm. So if you are just considering a point over here, let's say point P and another point take it as Q are 5 and 10 centimeter. So P there, मान लो Q is somewhere over here, which is at a distance of 10 centimeter from the axis of rotation. The ratio of angular velocity of P and Q is. हमको find out करना है P का angular velocity और Q का angular velocity क्या है, ठीक है? बोलो. 1:1 है क्या? बोलो बेटा. Sir 1:1. हाँ 1:1. So yeah. So over here we can observe that every particle is going to cover equal angles, right? Because omega is theta divided by t.
angular displacement by time. So if a disk is rotated by some angle, so each and every particle is going to cover the same angle. So we can write angular velocity of not only these 2 points, angular velocity of any point will remains constant. So we can write the ratio will be equal to 1:1. क्या समझ में आया? Any doubt? Sir, can you explain again how it is constant? So if you are considering there is a particle disk something like this, ये rotate कर रहा है about its axis with some angular velocity. ठीक है? So if I am just considering a point over here, let's say point A, and another point over here, take it as point B. ठीक है? अभी मान लो थोड़ा रोटेशन हो गया, रोटेट करके पहले मान लो ये लाइन में था, अभी रोटेट करके इधर आ गया, तो वी कैन ऑब्जर्व दैट ये पॉइंट ए कितना एंगल में कवर किया है उतना एंगल पॉइंट बी भी कवर कर रहा है, समझा? Yes. The angular displacement of point A and point B are same, Yes. but their linear displacements are different, समझा? तो we can write a sub particle, not only for these two particle, आप कोई भी particle consider करो, वो सब particle का angular displacement, angular velocity and angular acceleration will remains constant. But if they're asking about linear velocity, means linear velocity, linear displacement, linear velocity and linear acceleration, तो क्या रहेगा? अगर linear displacement देखेगा, हाँ अलग अलग रहेगा, उसका रेशियो क्या रहेगा? 1:2. 1:2 पे रहेगा, because S is equal to R into theta, V is equal to R into omega. ओमेगा कांस्टेंट है, अगर किसका R ज्यादा है, अगर मान लो ये पॉइंट के लिए R1 है और ये पॉइंट के लिए R2 है, तो वी कैन राइट किसका रेडियस ज्यादा है उसका डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी ज्यादा रहेगा. बट ओवर हियर थीटा, अल्फा एंड ओमेगा विल रिमेन्स कांस्टेंट. समझ में आया? Yes, sir. इसमें कुछ डाउट है किसी को? Sir, can you show the previous So, figure? सर अगर वो अपोजिट साइड में रहेगा तो भी इक्वल रहेगा ना उनके, थीटा, ओमेगा और अल्फा. या कोई भी पॉइंट, नॉट ओनली फॉर दैट पॉइंट, कोई भी पॉइंट में हर एक पार्टिकल, अगर आपने डिस्क को 360 डिग्री रोटेट करेगा तो डिस्क में कितना भी पॉइंट है वो सब पॉइंट 360 डिग्री रोटेट करेगा. तो सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा. ओके? We'll take next one. A stationary wheel starts rotating about its own axis at a uniform angular acceleration of 8 radians per second square. Time taken to complete 77 rotation is. Try to find out the answer. इसको solve करो. The stationary wheel, so we can take it as इसका initial velocity क्या हो गया? 0 हो गया. We can write omega initial is equal to 0. AU जैसा है. With the uniform angular acceleration 8 radians per second. तो alpha का value दिया है, that is 8. So this we can take it as, it's like A. The time taken to complete 77 rotation is. इसमें थीटा का वैल्यू मिलेगा. अगर एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो इट विल कवर एन एंगल ऑफ 2 पाई 360 डिग्री. तो अगर 77 रोटेशन कंप्लीट किया क्या होगा? इनटू 77. So we know the value of, this is like displacement. So we know the value of u, a and s, and our aim is to find out the value of t. तो कौन सा इक्वेशन यूज करेगा? S is equal to ut plus half. Yeah, s is equal to ut plus half at square. So in angle, it becomes theta is equal to initial angular velocity into time
plus half into angular acceleration into t square. तो t का वैल्यू फाइंड आउट करो. अब पाई को 22/7 ले लो कैलकुलेशन के लिए. हेलो सर. बोलो बेटा. सर 11 है क्या? या देखते हैं. तो 2 theta divided by alpha under root will be the value of t. तो हम वैल्यू पुट कर सकता है अंडर रूट ऑफ 2 into थीटा का वैल्यू क्या था? या थीटा का वैल्यू था 22 सॉरी 2 into पाई. पाई को आप 22/7 ले लो into 77 divided by alpha. Alpha is nothing but 8. So you can cancel this. तो ये क्या 11 हो गया. So you can write this will be equal to nothing but अब इधर से 8 cancel कर सकते हैं. So this can be written as nothing but 8 into 11 into 11 divided by 8. So am I? Any doubt? Sir, this question was from which column in motion in a plane? Level 1 class work question number 40. Thank you, sir. सर बोलो बेटा. सो रूट 2 थीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू टी, वो इक्वेशन कहाँ से आया? से पहले क्लास अटेंड किया था. यस सर, नेटवर्क इशू था थोड़ा सा. इसमें हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को नॉर्मल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है. ठीक है. सेम एज लाइक v is equal to in case of circular motion, in case of linear motion वो लिखते हैं ना v is equal to u plus at. ऐसा उसका करस्पॉन्डिंग एंगुलर में लिखेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी is equal to initial angular velocity plus alpha into t. ठीक है. जो भी इक्वेशन उसको लीनियर के साथ कंपेयर करना है. लीनियर में थीटा जैसा, एंगुलर में लीनियर में डिस्प्लेसमेंट जैसा, एंगुलर में थीटा. v जैसा ओमेगा, a जैसा अल्फा. ठीक है. Take next one, question number 41. A circular disc is rotating about its one axis at a uniform rate. Complete 30 rotations in 1 minute. The angular velocity of disc is. Find out. थोड़ा हमने डिस्कस किया था आरपीएम को इसमें कैसे कन्वर्ट करना है, रोटेशंस पर मिनट को रेडियंस पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है. पाई सर पाई. Okay. So you can write omega is equal to theta divided by t. Let's complete 30 rotations in 1 minute. तो एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो पाई. तो 30 रोटेशन मीन्स 2 पाई into 30 divided by time is 60 seconds. So you can cancel this. So this will be equal to pi radians per second. Any doubt? No sir. Next one, solve this question number 42. A particle is moving at a uniform speed 2 meter per second along a circle of radius 0.5. The centripetal acceleration of particle is. Centripetal acceleration के लिए इक्वेशन क्या था? Centripetal मतलब नॉर्मल. v square by तो r. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r. तो देखना कौन सा इक्वेशन, कौन सा टर्म दिया है इधर. तो v दिया है. 2 ये क्वेश्चन में Sir, v का 8. वैल्यू 2 दिया है. 8 मीटर पर सेकंड. एंड r 8. दिया है 0.2. 8. ओके.
तो centripetal acceleration is, centripetal means normal, that is equal to v square divided by r. तो v square का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया, r का वैल्यू क्या हो गया 0.5 या 1/2. So we can write will be equal to 8. Yes. Next 43 कर दो. A particle P is moving in a circle of radius a with a constant velocity v. See the center of circle and AB is a diameter. Then passing through B, the angular velocity of P about A and C are in the ratio. So question का meaning है, suppose if you are considering a circular path, okay? A particle P is moving in a circular path of radius A with a constant speed v. C is a center, तो इसका जो center है वो क्या हो गया C हो गया. And AB is a diameter, so we can just draw a diameter over here. So this is representing a diametric line. Let's say this is AB. Okay. When passing through B, the angular velocity of P, तो particle है वो B से pass हो गया with the velocity let's say V, और इसका radius को क्या A दिया था. Okay. तो B से pass कर रहा, then angular velocity of P about A and about C is, अगर हम लोग C से देखेगा तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए रिलेशन क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी. ओमेगा और v में क्या रिलेशन है? ओमेगा इज v बाय r. yes v है ना? v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो ओमेगा इज v डिवाइडेड बाय r. सो इफ आई एम ऑब्जर्विंग विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट c, अगर आप पॉइंट c से देखो तो वेलोसिटी क्या हो गया? v हो गया, और रेडियस क्या हो गया? a हो गया. अगर सेम थिंग आप पॉइंट ए से देखो, पॉइंट ए से देखे तो वी कैन राइट एंगुलर, उसका वेलोसिटी हो गया v एंड रेडियस क्या होगा? 2a, राइट? सो इन क्वेश्चन दे आर आस्किंग एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p अबाउट a एंड अबाउट c. सो ओमेगा ऑफ a डिवाइडेड बाय ओमेगा ऑफ c पूछा है, तो v by a divided by v by 2a. So we can write they are in the ratio 2:1. समझ में आया? yes. Sir, can you please explain that? Sir, v by 2a सर v बाय 2a होगा ना उधर. हाँ, v by 2a. Sir, can you explain हाँ, v sorry, by sorry. 2a कैसे? v by 2a. So can you explain this again? And इसका v by a. सर 1:2 we can take it as 1:2 है. हाँ सॉरी सर. They are in the ratio 1:2. Sorry. तो va by vc पूछा है, ठीक है? Sorry sir. So if you are considering the particle at point B, ठीक है? Point B का particle को हम लोग देख रहा है, and we are observing it from point A. Point A से observe कर रहा है. तो particle जब A point में आ गया, इसका velocity हो गया v, and हम लोग कहाँ से देख रहा है? इधर से देख रहा है. चलो इसका सेंटर जैसा मान लिया, एक और सेंटर मान लिया, एक का सेंटर मान लिया, तो रेडियस क्या हो गया इसका? 2a हो गया ना. ओके ओके. तो फिर c के रिस्पेक्ट से it's a and a के रिस्पेक्ट से it's 2a. 2a, yes. Tolly, Opotipo. But R will be the same, right? R of circular path, मतलब with respect to A, एक आप सेंटर कंसिडर किया तो आपका सर्कुलर पाथ A है. Okay. Yeah, got it. And so the formula is v square by r, right? No. V square by R is equation for A. Yeah. Omega is V by R. Okay. ओमेगा का वैल्यू पूछा है, A का वैल्यू नहीं. Try to solve this one. Question number 37. A flywheel is rotating about, flywheel मतलब एक disc shape object ही है, ठीक है? Just consider as a disc shape object. So flywheel is rotating about its one axis at an angular velocity of 11 radians per second. Angular velocity
in revolutions per minute is, इसको RPM में convert करना है. Find out. Assume that n RPM था, तो RPM को रेडियंस पर सेकंड हम लोग ऐसे कन्वर्ट करता है n into 2 pi divided by 60, right? So n into 2 pi by 60 is equal to, we can take it as 11. तो n का वैल्यू फाइंड आउट करो, पाई को 22 by 7 मान लो. देखो क्या मिल रहा है आंसर. So n can be written as 11 into 60 divided by 2 pi. तो हो गया 11 into 60 divided by 2 into pi. Pi we can take it as 22 by 7, right? So 100. So you can cancel this 105. and this. So 105. तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. So we can write ये 60 और 4. तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा. So we can write this 15 into 7. तो क्या होगा, 105. समझ में आया? Any doubt? तो रोटेशंस पर मिनट को रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाइड विद 2 pi by 60. What is the answer for next one? 38. A stationary wheel start rotating about its own axis at constant angular acceleration. If the wheel completes 50 rotations in the first 2 seconds, then the number of rotations made by it in the next 2 seconds is. Find out. इसको भी आप linear के साथ compare कर दो, so that we can easily find out the answer. तो उसमें क्या दिया है? A stationary wheel starts rotating, so we can take it as its initial angular velocity is equal to 0. This is like u is equal to 0. Angular acceleration, if the wheel completes 50 rotations, so we can find out the value of theta. 50 rotations, एक rotation में 2 pi cover करेगा, तो 50 rotation में क्या हो गया, 50 into 2 pi, 100 pi in 2 seconds. तो time क्या हो गया, 2 seconds. This is like s and this is like t. Then the number of rotations made by it in the next 2 seconds. तो next 2 seconds में कितना cover करेगा वो find out करना है. तो basically क्या distance find out करना है, तो कौन सा equation use करेगा? S is equal to ut plus half at square. तो हमको पहले इसका acceleration पता नहीं है, तो first find out the सर value of दिया है वो acceleration. कांस्टेंट दिया है. नहीं पता, वो उसका वैल्यू पता नहीं है ना, पहले वो वैल्यू ढूंढो. एंड्रॉइड ही लेना चाहिए. So we can write s is equal to, इसका इधर इक्वेशन क्या आएगा, theta is equal to initial angular velocity into t plus half into alpha into t square. So first we can find out what about the value of this angular acceleration. तो हो गया 100 pi सर. yeah into half into alpha into t square. t का वैल्यू क्या था, 4. So alpha का वैल्यू मिलेगा 50 pi. Now we can find out what about the value of displacement in next 2 seconds. तब एक काम कर दो, 0 to 4 find out करो और 0 to 2 वाला subtract करो, तो 2 to 4 मिल जाएगा. So again, if you are using that equation, theta is equal to ut plus half at square. तो half into alpha का वैल्यू हो गया 50 pi into t square. मतलब 0 to 4 कंसिडर करें तो 16 हो गया. So we can write 8 into 5, that is 40, 400 pi. तो theta cover करेगा 400 pi from 0 to 4. तो 0 to 4 में 400 pi and 0 to 2 में कितना था, 100 pi. So we can find out 300 pi. 300 pi. So we can write theta from 0 to 2 is nothing but 100 pi, and theta from 0 to 4 is 400 pi. So theta from 2 to 4 is nothing but 300 pi.
समझ में आया? Any doubt? No, sir. सर पर आदित्य? रोटेशन पूछा है. हाँ रोटेशन पूछे उसको डिवाइडेड बाय 2 पाई कर दो तो नंबर ऑफ रोटेशंस पर है. इतना एंगल में क्या है? So if they are asking number of rotations, then the number of rotation next 2 seconds. So 300 pi क्या है? So we can write the number of rotations is equal to 300 pi divided by 2 pi. एक Yes, rotation sir. के लिए 2 pi. So we can cancel this. So this will be equal to What are 150. So am I? Any doubt? No, sir. Try to find out the answer for next one. A point-sized body is moving along a circle at an angular velocity of 2.8 radians per second. Centripetal acceleration of body is 7 meter per second square. Then speed is. तो v ओमेगा और a में रिलेशन क्या है? A equals to V into omega. हाँ, a is equal to v into omega. तो a is equal to v into omega से लोग फाइंड आउट कर सकते हैं v का वैल्यू क्या है. v is equal to Sir, a divided by 2.5 meter per. okay. So a का वैल्यू क्या दिया है? Angular 7 divided by omega. Omega is 2.8. तो क्या है 2.5 आ रहा है? हाँ सर. Yes, sir. Okay. तभी हम लोग आगे भी सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, इसका भी होमवर्क में देता हूँ. So we'll continue in the next class. Thank you. तो किसी का अगर कुछ क्लास मिस हो गया है तो प्लीज इन्फॉर्म मी. ओके.